Hello, everyone. Welcome to another session on Life Simplified. We are continuing with our series on Open the Heart Center, and today we have another interesting topic where we are going to talk about the two dual conversations that keep having in our heads or in our hearts. So heart और mind की जो एक लड़ाई चलती है, conflict चलता है, it is quite a constant conflict for many of us, and we're going to talk a little bit about it today. All right. So before we start, let's do an invocation. Be aware of your heart center. Be aware of your crown center. To the Supreme God, Divine Father, Divine Mother, to Master Choa Kok Sui, to Lord Mahagurji Mailing, to all the great ones. We thank you for your blessings. Thank you for your guidance, your help, and protection. Thank you for your presence throughout the session. Thank you in full faith. So be it. Gently open your eyes. All right, so welcome. Now there is, what do you think, by the way? Heart और mind में किसका सुनना चाहिए? दो आवाज हम लोग के अंदर चलती है, और बाय द वे सुनता कौन है? तो सबसे पहले अगर हम लोग समझे कि who we are, I mean at least theoretically अगर हम लोग समझे, so yes, we are all souls, and we have these different vehicles. We have emotions, we have thoughts, we have our physical body. So sometimes we as souls, हम लोग कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसका बात सुने, दिल की बात सुने कि दिमाग की बात सुने. डू वी लिसन टू द हार्ट or do we listen to our mind? Okay, so there was one sharing which I wanted to talk about in today's session. One understanding maybe is जब भी कुछ forgiveness related बात होती है, there are times where people breach our trust. There are times where people hurt us. There are times where people do nasty things to us, and हम लोग बहुत चीज स्पिरिचुअलिटी में समझते हैं, सुनते हैं कि ब्लेस करिए, लॉ ऑफ कर्मा फॉलो करिए, ये करिए, वो करिए. लेकिन आप देखेंगे कि हम लोग जितना भी करते हैं, लेकिन कभी कभी दिमाग यानी कि माइंड हम लोग को यही बोलता है कि व्हाई शुड आई डू इट, इट इज नॉट माई फॉल्ट. समटाइम्स इट जस्ट कीप सेइंग दैट. कभी कभी माइंड ये भी बोलता है कि नहीं, हो सकता है मेरा कुछ कर्मा होगा, द कर्मास आर कुछ मैंने सो किया होगा, इसीलिए हम कुछ रीप कर रहे हैं. देयर कुड बी दीज कॉन्वर्सेशंस, दीज कॉन्फ्लिक्ट्स कीप प्लेइंग इनसाइड. So just a sharing, this I had actually once heard, credits to one of our instructors, Mr. T Mathimaran. In his session I had heard, और वो चीज़ मेरे दिमाग में बहुत फिट हुई थी, और that is something which I'm sharing today actually. So when it comes especially to forgiveness, you will see if you start using your mind, then we will never be able to forgive, because forgiveness happens through the heart. माइंड का जब इस्तेमाल करते हैं कि नहीं हम फॉरगिव क्यों करें, देन यू विल ऑलवेज कंपेयर, कम्पीट, यू विल कीप वेइंग कौन जीता कौन हारा. और वहीं पर ग्रैंड मास्टर की बहुत अच्छी एक लाइन है, मास्टर का एक बहुत अच्छा कोट है जो याद आता है, दैट मास्टर सेज दैट व्हेन इट इज अबाउट फॉरगिवनेस, फॉरगिवनेस इज नॉट अबाउट हु इज राइट और हु इज रॉन्ग. लेकिन जो माइंड है, माइंड हमेशा यही कैलकुलेट करता है हु इज राइट, हु इज रॉन्ग. माइंड का ऑफकोर्स एक रोल है, और उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, बट नॉट इन टुडेज सेशन, बिकॉज टुडेज सेशन इज मोर कनेक्टेड टू द हार्ट, राइट? So one thing I wanted to share, especially in today's session, is whenever friends it comes to, or whenever we talk about say forgiveness, जब भी हम लोग forgiveness के बारे में सोचते हैं, जब भी हम लोग सोचते हैं कि let go करना है, बहुत लोग let go नहीं कर पाते हैं. क्यों? क्योंकि we are putting sometimes an over excessive mind to it, and always thinking कि is it right, is it wrong, किसकी गलती थी, उसकी गलती थी कि मेरी गलती थी, मेरी गलती थी कि उसकी गलती थी, और कितनी गलती किसकी थी. Sometimes this is all the nature of the mind, and the mind will always try to prove, and will always try to find faults, and will never come to a conclusion that I need to forgive.
right? So that is why forgiveness कहा जाता है, and we all know about it. It comes through the heart. So friends, for many of us who find it sometimes difficult to forgive, we need to shift our gear. We need to shift our gear from mind to the heart. We need to focus on the heart at that times. नहीं तो हम forgive नहीं कर पाएंगे. हम लोग लोगों की गलतियों को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे. जितना हम लोग उसमें थिंकिंग प्रोसेस डालेंगे, उतना वी विल कीप कमिंग टू द कंक्लूजन दैट नो इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज दिस, इट इज दैट, और माइंड अपने को हमको खाली एक्सक्यूजेस देता रहेगा. ओके, सो एज यू सी इन द टॉपिक आई हैड पुट कि किस समय कौन सा चीज यूज करना चाहिए. सो टू माई लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग एंड व्हाट आई वांटेड टू शेयर इज, अगर if we are at a place where we are not having inner peace and we need to forgive, तो किसकी सुननी चाहिए उस समय? Whom will you listen to? If you need to practice forgiveness, you will listen to the heart, you know. So वो दो पाथ होते हैं, माइंड का सुने कि हाथ का सुने, हाथ का सुने कि माइंड का सुने. So when it comes to forgiveness, we have to listen to the heart and prioritize the heart, because heart will give you the capacity to let go. Heart will give us the capacity to drop things. Heart will give us the capacity to not hold on to grudges and still see the goodness in other person and still move on with life. लेकिन अगर हम लोग हार्ट को श्रंक रखेंगे, हार्ट को छोटा रखेंगे, तो हमेशा अंदर में internally it will be very difficult for us to have peace or to have happiness. So if we want peace inside, if we want happiness inside, we need to practice forgiveness. But again, there is another thing Master says, that inner forgiveness, यानी कि अंदर से हम लोग को हर इंसान को माफ करना है. Inner forgiveness is for all, but outer forgiveness is not for all. And I feel कि internally we don't have a choice. We have to use our heart so that we have inner peace. But externally, we have to be a little smart. We have to think. We have to sometimes stand up and fight if something terribly is happening wrong. We need to know where to draw a line. Sometimes we need to also probably stay away from certain people, stay away from certain things. That is outer forgiveness. So मास्टर यही बोलते हैं कि अंदर से inner forgiveness is for all, without any exception. But outer forgiveness is not for all. We can't just blindly externally forgive anyone and everyone. Like आप ये नहीं कर सकते हैं कि अगर you know कोई आपके सोसाइटी में या आपके एरिया में कोई चोर घूम रहा है, so internally you have to forgive. You don't have a choice. You can bless that person, let go, forgive. But externally, what will you do? Externally, you can't forgive. You have to put that person behind the bars. You have to maybe file a case. You have to take some action so that वो और लोगों को नुकसान न पहुंचाए. तो वहां पर आप माइंड इस्तेमाल कर सकते हैं. So personally, I feel it is a combination of two. Internally, there is heart, but externally, we have to be firm at times. We have to say no at times. We have to stand up and fight for good also at times. और उसके लिए we'll have to use our mind. Otherwise, people may take advantage of your goodness. People may take you for granted just because they know that whatever you do, you're going to forgive. Whatever they do, you will let go. और कभी कभी ये होता है spiritual path पे. Sometimes we end up becoming over permissive. We end up allowing people to do many things which they want to do. But अंदर से हम लोग forgiveness कर रहे हैं, लेकिन externally we have to use the mind. We have to draw a line. We have to calculate a few things so that certain precautions are being taken. So, but then internally, we have to maintain the energy or the guidance of the heart. Okay, now let's take some real life example. You know, आप chat box में डाल सकते हैं where you are finding it confusing कि कैसे इसको करें. So let's take a smaller example कि हम लोग के day to day life में जो होता है, जो डे टू डे लाइफ में होता है. सपोज आपके घर में ही कोई है, आपके फैमिली में, या हो सकता है आपके ऑफिस में. Suppose in your office there is an employee who is coming late to office every day.
ठीक है, वो रोज एम्प्लॉय आ रहा है, लेट आ रहा है, और आपके ऑर्गेनाइजेशन में समझ लीजिए 50 लोग काम करते हैं। अब 50 में से एक एम्प्लॉय जो है वो रोज लेट आ रहा है। सो अब हम लोग सोच, लेकिन वो एम्प्लॉय काम अच्छा करता है, वो एम्प्लॉय आपका दिल जीता हुआ है उसने, एंड यू रियली आर फॉन्ड ऑफ दैट एम्प्लॉय एंड यू डोंट वांट टू लेट गो ऑफ दैट एम्प्लॉय। तो फॉर इस तरह की सिचुएशंस में ऐसा होता है कि हम लोग क्या इस्तेमाल करें, हार्ट इस्तेमाल करें कि दिमाग इस्तेमाल करें। तो हार्ट बोलेगा कि इट्स ओके यार, उसको आने दो, वो तो काम अच्छा करता है, डजंट मैटर। माइंड क्या बोलेगा, माइंड बोलेगा कि नो, वी हैव टू फॉलो द रूल्स, वी हैव टू, हाउ कैन वी अलाउ हिम टू डू दिस। सो माइंड बोलेगा कि नहीं, ये तो गलत है, क्योंकि वो अगर एक इंसान गलत करेगा तो कल हो सकता है कि दूसरा भी एम्प्लॉय यही काम करेगा, देन व्हाट विल हैपन। सो द माइंड इज ऑल्सो राइट and the heart is also right, because the heart is seeing the divinity in that person. The heart is realizing कि no, this employee is good, is hard working, और इसे मुझे रिटेन करना है, ये मेरे लिए अच्छा काम कर रहा है, ये कंपनी के लिए सोचता है, लेकिन उसमें एक वीकनेस भी है। तो वहां पर आपका माइंड आपको दूसरा पिक्चर भी दिखा रहा है कि इस वीकनेस को टॉलरेट करोगे, या ये उसकी नेगेटिव हैबिट को टॉलरेट करोगे, तो तो कंपनी में केओस हो सकता है, बाकी एम्प्लॉयज कंप्लेन कर सकते हैं, विच इज ऑल्सो ट्रू। अब इस सिचुएशन में क्या होता है, सिचुएशंस लाइक दिस वी ऑल्सो गेट कंफ्यूज कि अब हम किसका सुने, इसको अलाउ करें कि इसको डांटे। सो नाउ हियर व्हाट कैन वी डू, जस्ट वन सिचुएशन आई हैव गिवन, तो इसमें हम लोग कैसे बैलेंस कर सकते हैं। सो व्हाट वी कैन डू इन सच सिचुएशंस इज we use the heart internally. Of course you can bless, don't get internally angry because you know that this person is good और ये काम अच्छा कर रहा है, sincere है, but कुछ weakness तो हर इंसान में होती है। So internally you need to remember that yes, everybody makes mistakes and everybody has weaknesses. हो सकता है कि उसके अंदर भी ये एक weakness है, but externally what will you do? So अंदर से you have forgiven, you're okay with it, you have told yourself कि ठीक है ये weakness है, आपने मन में सोच लिया and you're at inner peace. But externally, will you allow this to happen? If it continues to happen, if it continues like this, तो हो सकता है आपके ऑफिस का पूरा कल्चर खराब हो सकता है, हर इंसान ये करने लगेगा, तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट हो सकती है, तो there will be a high price to pay. So externally you need to use the mind. Externally probably you can go and talk to that person, handle it in a way, tell that person कि no, इसको तुमको थोड़ा सा ठीक करना होगा, you'll have to externally also take some actions. Now the good part is, फर्स्ट जब हम लोग हार्ट यूज करते हैं, ब्लेस करते हैं, फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करते हैं और अपने अंदर से एंगर को जब हटा देते हैं, तब आप अगर किसी के साथ फर्म भी होंगे या किसी को कुछ समझाएंगे भी, दैट पर्सन विल बी रिसेप्टिव टू यू। बट इंटरनली इफ यू हैव एंगर एंड एक्सटर्नली, हम कभी कभी लोग क्या करते हैं, उल्टा करते हैं, अंदर में तो एकदम एंगर भरा पड़ा है, फॉल्ट फाइंडिंग है, नेगेटिविटी है, इंटरनली दे आर बॉइलिंग विद एंगर, एंड एक्सटर्नली यू आर प्रिटेंडिंग टू बी वेरी वेरी पोलाइट एंड यू आर टॉकिंग वेरी नाइसली। ये दोनों सिचुएशंस हो सकती है। सो एक, अगर अंदर में एंगर है और बाहर में यू आर गोइंग टू द पर्सन, टॉकिंग पोलाइटली टू द पर्सन, डू यू थिंक इट विल हैव एन इम्पैक्ट? आप कितना भी अच्छा बात कर लीजिए, इट विल नॉट पेनिट्रेट, it will not have an impact, because the energy is full of anger, the energy is full of frustration, energy is full of the energy is not coming from the heart. Okay, whereas in the other situation where internally you bless, you project love to that person, you also see the goodness in that person, and externally when you talk to the person, you start by saying that look, you have these good qualities in you, good job done, but can you please fine tune this one quality, because ये अगर fine tune नहीं करोगे तो the culture of the office so and so and so, तो आप उसे प्यार से समझा सकते हो। Now the thing is, आप प्यार से, हो सकता है कि आपने प्यार से बहुत लोगों को समझाया है, लेकिन उसका इम्पैक्ट अगर नहीं आया है, अगर this is been happening, that means internally we have anger, internally we have not practiced forgiveness. So internal forgiveness, inner peace, inner happiness, and internally radiating positive energies towards an XYZ person is extremely important, because उससे आप जो भी उसको बोलेंगे उसका एनर्जी चेंज हो जाएगा। Like let me give you an example. Have you not seen कि कुछ लोग जब आपके ऊपर गुस्सा करते हैं, कुछ लोग जब कुछ बोलते हैं,
अच्छा भी बोलते हैं तो भी तो लगता है कि गाली दे रहे हैं, मन ही मन कुछ नेगेटिव सोच रहे हैं. डोंट वी फील दैट? Even if people are complimenting you, talking nicely to you, you still feel in your mind that no, something is wrong. You don't buy in that. You don't buy in that. You don't give in to that. वैसी फीलिंग आती है. Similarly, you will see कि कुछ लोग हमको डांट भी देते हैं. You know, some people they scream at us, but we still feel loved because we know कि उसका intention is for our good. और कहीं ना कहीं उनके हार्ट से हम लोग को एनर्जी फील होती है. वी डोंट फील एज इफ वो हमको डांट रहे हैं. वी नो दैट वो अगर कुछ बोल भी रहे हैं, इट इज कमिंग आउट ऑफ लव एंड वी लुक फॉरवर्ड फॉर दैट. So this happens when internally you're following the heart, but externally sometimes we have to use the mind to organize things, to normalize things, and to bring proper law and order. If you only use the heart inside and outside all the time, then there will be chaos. I repeat, if you use the heart inside and outside all the time, there will be chaos. There will be confusion. It will become very difficult to handle situations, to handle things. So to summarize and to give a closing message, coming from obviously from master's quotation, inner forgiveness for all, outer forgiveness not for all. So internally आप हार्ट ही यूज करें, लेकिन बाहर से जब हम लोग किसी को कुछ बोलते हैं, कुछ करते हैं, तब we have to use our mind and act accordingly. But अंदर से we don't have a choice. We cannot hold on to grudges, hold on to anger, and if that is happening, we will never have inner peace. Okay, so I hope this was helpful, and I hope this has given us some insights. And if you would like to share more situations where you are confused, feel free to put it on the chat box. Maybe we can all help each other and try to figure out, ताकि हम लोग सब एक दूसरे को मदद कर सके, समझ सकते कि डे टू डे लाइफ में कैसे इसको हैंडल करें. Okay, I just gave a one-off situation, but we can think about more situations. It happens in our homes, it happens in organizations. बहुत जगह पर ऐसे होता है कि समझ में नहीं आता है कि दिल से तो हम चाहते भी, बुरा भी नहीं बोलना है, लेकिन कुछ ठीक भी करना है, तो कैसे करें, तो कैसे करें. So आपको एक to close also I'll give you something very practical tip is अगर आपको किसी को कुछ नेगेटिव बोलना भी है या किसी की कुछ हैबिट को करेक्ट भी करना है, डोंट कीप मेंटली ब्रूडिंग ओवर इट. यू नो, माइंड में उसको खाली प्ले मत करते रहिए, उससे उसके अंदर की वो हैबिट और बढ़ेगी. What you could do is, first you internally bless, practice forgiveness, radiate positive vibes to that person, and then you go and talk to that person. But when you talk to that person, first start by reminding the goodness of that person. Like for example, अगर आपको किसी को फीडबैक भी देना है, पहले आप अंदर से उसे ब्लेस करिए, पॉजिटिव एनर्जी दीजिए. और जब आपको लगता है कि अंदर से आपके अंदर कुछ भी एंगर नहीं है उसके प्रति, then you are fit enough to give a feedback to that person. And when you go and give a feedback to that person, you start by first expressing at least 2 to 3 good qualities which that person has. It has to be genuine. It cannot be fake. बहुत लोग मार्केटिंग में, बिजनेस मैनेजमेंट स्कूल्स में सिखाते हैं और उन लोगों को आदत होती है कि कॉम्प्लीमेंट से शुरुआत करें, लेकिन इफ इट इज फेक, द एनर्जी विल नॉट बी ट्रांसफर्ड. इट हैज टू बी रियल. It will be real only if there is truth in it, if there is integrity in it, if there is genuinity in it. तो अगर आप जेन्युइनली, आपको उसकी अच्छाइयों को ढूंढना पड़ेगा और आप में हिम्मत होनी चाहिए उसको आप मुंह पे बोल सकें कि यू नो व्हाट, यू रियली हैव दिस गुड क्वालिटी इन यू, बट यू नो दिस थिंग. सो देन आप जब 2 अच्छाइयों के बाद एक फीडबैक देते हैं, then the other person has the capacity to at least digest it. This formula can be applied even for your children. It can be applied even for your husband, your wife, your employees, anyone. आपके आसपास के कोई भी लोग, आप इसे ट्राई करके देखिएगा. हम लोग कभी कभी उल्टा करते हैं. क्या करते हैं कि हम लोग इतना नैग करते, इतना ग्रिप करते कि तुम्हारे अंदर ये प्रॉब्लम, ये वी कीप ऑन पोकिंग nagging, and we forget that we also need to see the goodness in that person. Now because that happens, then the other person doesn't listen. वो अंदर ही अंदर अपनी एक वॉल बना लेता है, and whatever you're telling him or her, there is no impact
उसमें कोई इम्पैक्ट ही नहीं रहता. Okay, so you can try this. First, make sure that you have a heart to heart connect and a heart to heart bond with that person. And then when you tell that person, तब आप कुछ बोलेंगे, then there is a balance of mind and heart. It has to be balanced. You can't keep mind aside and heart aside. Inner forgiveness अलग है, outer forgiveness अलग है. अंदर से लेकिन एनर्जी हमेशा क्लीन होनी चाहिए, लविंग होनी चाहिए. बाहर से you have to go case to case basis. All right. So I hope this was helpful. Thank you very much for joining in. I will see you again day after tomorrow. So today is Tuesday. So I see you again on Thursday. All right. Atma Namaste. Thank you very much for watching.